Given are the characteristics of an element X, a salt former, found in liquid state, reddish brown in color, exists as a diatomic molecule. The element X identified is sodium found in solid state, chlorine in gaseous state, bromine in liquid state, beryllium in solid state. रेडिश ब्राउन इन कलर ब्रोमीन का होता है. क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों एग्जिस्ट करते हैं एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रोमीन के, दैट्स ऑप्शन सी, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The electronic configuration of an element of group 2A and period 3 is, as you know, all the elements of group 2A have 2 electrons in their valence shell, that is in their outermost shell. Option A 1s2 2s1, valence shell is 2s1. Option A represents the electronic configuration of an element of group 1A and period 2. Option B is 1s2 2s2 2p1, valence shell is 2s2 2p1. Option B represents the electronic configuration of an element of group 3A and period 2. Option C 1s2 2s2 2p3, valence shell is 2s2 2p3. Option C represents the electronic configuration of an element of group 5A and period 2. Option D 1s2 2s2 2p6 3s2. Option D represents the correct answer. Valence shell is 3s2. Option D represents the electronic configuration of an element of group 2A and period 3. Means option D is the correct answer. Next question. With reference to the different groups of the modern periodic table, the information that stands correct is that all the elements in group. Option A. All the elements in group 13 are metals. Incorrect. Boron is metalloid. Option B. All the elements in group 16 form 2 plus cations. Be incorrect. Elements of group 16 have 6 electrons in their valence shell. They form anions. -2 anions. Option C. All the elements in group 17 produce basic oxides. Be incorrect. All the elements in group 17 produce acidic oxides. Option D. All the elements in group 18 exist in gaseous state is the correct answer. Group 18 is noble gases. Means option D is the correct answer. All the elements in group 18 exist in gaseous state. Next question. When an atom M combines with another atom X, an ionic bond is formed. In this reaction, the atomic radius of the atom X increases because उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसीलिए उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है. अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते तो उसका रेडियस डिक्रीज होता. दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम एम. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर हमसे पूछा गया होता रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, दैट इज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू एटम एम. ऑप्शन सी और डी इररेलेवेंट है. The ionic radius of a positive ion is smaller than atomic radius of the element. The ionic radius of a negative ion is larger than the atomic radius of the element. Means option B, it gains electrons from atom M is the correct answer. Next question. The quantity of energy that an isolated gaseous atom in the ground electronic state must absorb to discharge an electron is termed as you know, the ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is ionization energy. Means option D, ionization energy is the correct answer. Next question. The given ion is formed from an element belonging to group. As you know,
All the elements of group 2a have 2 electrons in their valence shell, that is in their outermost shell. They lose their 2 electrons to form cations with a charge of 2 plus. 2 plus चार्ज है मीन्स गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2a मीन्स ऑप्शन ए ग्रुप 2a इज द करेक्ट आंसर. ये वैलेंस शेल नहीं है. वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको लूज कर दिया इस एलिमेंट ने, दैट्स वाई इस पे 2 प्लस चार्ज है. मीन्स ऑप्शन ए ग्रुप 2a इज द करेक्ट आंसर. आपको ऑप्शन डी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. In contrast to group 2 elements, group 1 elements are less. Given options में से जो correct answer है वो है option A, that is hard. Group 1 elements are less hard than group 2 elements. Group 2 elements have strong metallic bonds due to smaller size and have more number of valence electrons. Group 2 elements are harder than group 1 elements, or you can say elements of group 1 are less hard. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोर मेटालिक इन कैरेक्टर होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2. लेस लिखा था इसलिए ऑप्शन ए हार्ड इज द करेक्ट आंसर. अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स पीरियड 1 में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियोडिक ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन मूविंग डाउन ग्रुप 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 17 इज हेलोजेंस. मीन्स हम ग्रुप 17 को हेलोजेंस भी कहते हैं. द रिएक्टिविटीज ऑफ द हेलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट atomic radius increases in size with an increase of electronic energy levels. This lessens the attraction for valence electrons of other atoms, decreasing reactivity. Means option A, decreasing reactivity is the correct answer. Boiling point decrease नहीं होता, down the group increase होता है. आपको पता है फ्लोरीन और फ्लोरीन गैस है एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड. मीन्स डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं होती है. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 14. In which period of the periodic table will it be placed? First, write down electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Valence shell is 3s2, 3p2. Element belongs to group 14 or group 4a and period 3. Means element will be placed in period 3. That is option C. Means option C, 3 is the correct answer. Next question. The horizontal rows in the modern periodic table are known as you know, the vertical columns in the periodic table are called groups. The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. Means given options में से जो correct answer है वो है option D, periods. Mostly students groups और periods में ही confuse होते हैं. तो जो ट्रिक मैं याद करने के लिए यूज़ करती हूँ वो ये गूगल क्लासरूम. मीन्स कॉलम्स आर ग्रुप, फिर रोज ही लेफ्ट हो गए तो रोज क्या होंगे, पीरियड्स होंगे. गूगल क्लासरूम, कॉलम्स आर ग्रुप्स, रोज आर पीरियड्स. मीन्स ऑप्शन डी, पीरियड्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल are arranged as per their. The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number. And as you know, atomic number and number of protons are same. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is proton number.
Means option A, proton number is the correct answer. The elements in the periodic table are arranged as per their proton number or atomic number. Next question. The following table shows the difference between all the elements of X and Y families. With reference to the given table, X and Y families can be identified as property, reactivity, occurrence. X unreactive monoatomic, Y reactive diatomic. All the halogens exist as diatomic molecules. This means that the elements are made up of pairs of atoms that are chemically joined together. Means halogens shortlist हो जाता, ऑक्सीजन ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते ऑक्सीजन ग्रुप में. Valence shells of noble gases are completely filled. They do not combine with other elements to form compounds. Thus, noble gases are chemically unreactive. Thus, noble gases are known as inert gases. Noble gases are monoatomic. Means noble gases भी shortlist हो जाता. Alkali metals are not unreactive, they are reactive. और हमारे दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. That is, X is noble gases, unreactive monoatomic, Y is halogens, reactive diatomic. Means option C is the correct answer.